کہ यीशु मसीह ने, प्रभु मेरे ने जो सलीब पर 7 कलमात कहे, सारे खादम बारी बारी आएंगे और वो अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करने से पहले दुआ करते हैं और मैं पास्टर यूसुफ नदीम को दावत देती हूँ कि वो आएँ और छोटी सी दुआ करें ताकि हम प्रोग्राम को आगे शुरू कर सकें। पास्टर यूसुफ नदीम। खुदावन हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद और तेरी सताइश करते हैं। तुझे मुबारक कहते हैं चूँकि तू मुबारक खुदा है और हमेशा अपने लोगों पर रहम करता है। तेरे रहम, तेरे तरस के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं और तेरे ही मार खाने से हमें शिफा मिलती है, हमें बरकत मिलती है और खुदा के साथ हमारा वो रिश्ता बहाल हो जाता है जिसमें हम खुदा ताला को ए बाप कहकर पुकारते हैं। हमें फर्जंदियत का हक मिल जाता है। हम खुदावन तेरे मार खाने से खुदा बाप के बेटे और बेटियां ठहराए जाते हैं। इतने बड़े इस्तेहकाक और आनर के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदा। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं। तेरे आज खुदावन इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र हो खुदावन। जिसने भी तेरे बेटे और बेटियां खुदावन तेरी उन बातों को याद करने को है, उन पर रोशनी डालने को है, रूहुल कुदस के मसा को मांगता हूँ, फ्रेश अनॉइंटिंग को मांगता हूँ, लफ्ज़ों की तरतीब को मांगता हूँ खुदावन। जब हम 7 सलीबी कलमात पर बात करते हैं, तेरी बातों को दोहराते हैं खुदावन, तेरे फजल को, तेरे रहम को मांगता हूँ। कसरत से आज है खुदावन तमाम अजीज़ों को, बहनों भाइयों को कसरत से बरकत दे। यीशु के पाक जलाली आला व अफसल नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। थैंक यू पास्टर। तो आइए हम अपने प्रोग्राम की तरफ बढ़ते हैं और सबसे पहले मैं दावत देती हूँ पास्टर सैलिश को, जो कि हमारे लिए पहला कलमा जो ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं, ये माफ़ी का कलमा है। लूका की अंजील 23 बाब और उसकी 34 वर्स में लिखा है। लूका की अंजील 23 बाब 34। यीशु ने कहा, ऐ बाप इनको मुआफ़ कर क्योंकि ये जानते नहीं कि क्या करते हैं। I would like to invite Pastor Salish to come and speak first saying of Jesus on cross. ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲਨੇ ਦੇ ਵਿਨਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾੜੇ। ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤਰਿਆ, ਮਾਰਾ ਜਰਿਆ। ਤਾਜ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਤੇ ਤਰਿਆ, ਮਾਰਾ ਖਾਵਣ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤੂੰ ਜਰਿਆ। ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਬਣ ਜਥੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨ ਤਪੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੇ ਪਾਰੇ। ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਲਨੇ ਦੇ ਵਿਨਿਆ ਹੈ ਦਿਲ ਯਿਸੂ ਪਿਆਰੇ।
Hallelujah. Thank you, Jesus. It's lovely to see each and every one of you. Isn't it exciting that we are worshiping true living God? And it's wonderful to be praising and worshiping Lord Jesus Christ with each and every one of you. I'd like you to share one verse from Luke chapter 23 and verse 34. And Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. I like to take you to a couple of scriptures back, a couple of chapters back, and if we see the background of this time, that we see that Jesus Christ was betrayed by Judas Iscariot, and he was taken to Jewish leaders, Jewish authorities, then he was taken to Roman authorities, and then he was passed back to Jewish, and those people, they crucified Jesus. And Jesus here on the cross, he says, Father, forgive them. Father, forgive them. Forgive, F-O-R-G-I-V-E. I've split that forgive word into two. For, F-O-R, for the world, and give, I myself give. Father, forgive them, I give myself to the world. Father, forgive them. And Jesus says, Father, they do not know what they are doing. They do not know. Who are they? Who are these people, they? Well, we know that it was certainly Judas Iscariot. We also know that there were Jewish involved. We also know there were Romans as well. So all of those, let's say all world, whoever didn't believe in Jesus, they crucified him. So Jesus says, Father, forgive them. They do not know me. And while I was with them, I told them everything, that I have come from you. I am in you. I revealed your kingdom to these people, but they still didn't believe me. Father, forgive them. They do not know. They do not know that I've come from you. They do not know that I am the author of their life. They do not know that their life is hidden in me. They do not know that I'm the Lamb chosen before the creation of this world. They do not know that in their life is hidden in me, and in that their life is fulfilled in me. Father, forgive them. Father, they think that by killing me, by crucifying me on the cross, they will put end to this body, Jesus. But they do not know that this may look like a carpenter's son. The body might look like a carpenter's son, but this body is filled with the holy power. This body is full of Holy Spirit, and death has no power on me. Death has no grip over me. They are crucifying me. They are killing me. But Father, forgive them. They do not know. They do not know me. We see in Acts chapter 3, verse 15, Peter says that you people, you crucified the author of life. Verse 17, Acts 3:17 says, Peter says that they acted in ignorance. Acting something in ignorance is that knowing the truth, but still overlooking the truth. Peter says, Acts 3:17, that they acted in ignorance and they crucified Jesus. Friends, let us be not like one of those who acted in ignorance. Friends, there is forgiveness in the name of Jesus Christ. There is forgiveness by our faith in the blood of Jesus Christ. If you need that forgiveness in your life, reach out to the Lord. He will forgive you. Whatever acts of ignorance you have had in your life, Jesus has the power to forgive all your sins. And by just our simple confession that Jesus, I believe your death on the cross, forgive me, Lord Jesus, for my disbelief in you. Forgive me, Lord, for all those acts of ignorance. Father, forgive them. Forgive me. Just by simple our confession, Lord will forgive us. Friends, you know, because of that Jesus' prayer almost 2,000 years back, we are here today. Father in heaven is still answering Jesus' prayer.
If that prayer wasn't said about 2,000 years ago, we would not be here today. Father in heaven still remembers, and he still honors his son's prayer, and Father in heaven still forgives us for everything. Jesus Christ prays for the people. Father, forgive them that whatever they've done in ignorance. Father, forgive them. Friends, Bible teaches us that whoever persecutes you, do not repay evil with evil. It says in 1 Peter chapter 3, verse 9, do not repay evil with evil, but actually bless them. That's what Bible teaches us. Bless those who persecute you. Romans 12:14 says this, bless those who persecute you. Only bless them, bless them, bless them. Do not curse them. Bible says that by blessing those, you receive blessing from me, Father in heaven. So we are to follow the footsteps of our Lord Jesus Christ. If we are in Christ, let us forgive those who has done anything wrong against us. And if we are not in Jesus Christ, let's invite Lord of our lives, that Father, I accept you, come into my life and forgive me of all my wrongdoings of the past. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Father, forgive them. Friends, that same prayer is being answered by Father in heaven. Let's approach to throne of grace in full confidence, full boldness, that once God has forgiven our things of the past, let us not remember those things of the past. Let's start a new life, new fresh life in Christ. And in Christ, Father has forgiven us everything of the past, because Jesus Christ has paid the penalty for your sins and my sins. Father, Jesus has taken all the punishment that our wrongdoings deserved. So let's approach to the throne of God in full boldness. Amen. God bless you all. पहले कलमे के बारे में हमें बताया। मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी है कि बदी के बदले बदी ना करो, बल्कि नेकी करके बदी के ऊपर गालिब पाओ। ये हमारे मसीह ने हमें सलीब पर, जबकि उसके दुश्मन उसको सता रहे थे, उसको तरह तरह की बुरी बातें कह रहे थे, उसके जिस्म को तोड़ रहे थे, उसके खून को बहा रहे थे, लेकिन उसने उनके लिए बद्दुआ नहीं की, बल्कि कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ़ कर, क्योंकि जानते नहीं कि क्या करते हैं। आज मेरे और आपके लिए ये सीखने की बात है, जब हमें लोग सताएं, तरह तरह की बुरी बातें हमारे लिए कहें, हमें एक दूसरे को मुआफ़ करना है। बदी का बदला बदी के इवज़ मत दो। तो आइए हम दूसरे कलमे की तरफ बढ़ते हैं। मैं तुझसे सच कहता हूँ, तो आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। लूका 23 बाब 42 और 43 आयत लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। इसके लिए मैं दावत देती हूँ खुदा के खादम मिस्टर ज़ियाउल्लाह को कि वो आएँ और वो आकर इस कलमे के ऊपर रोशनी डालें। ऐ खुदावन, ऐ मेरे यीशु, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और तेरे पाक रूह को दावत देते हैं कि हमसे बोले, हमसे कलाम करे। इन जीसस नेम, आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज ये खूबसूरत मौका जो आपके लिए खुदावंद यीशु मसीह ने अपने पाक रूह के वसीला से, अपने तरस के वसीला से आपकी ज़िंदगी में बख्शा है, इसको ज़ाया मत होने दें। क्योंकि जिस तरह हम देखते हैं कि खुदा के कलाम में लिखा है, और हलवाहों ने मेरी पीठ पर हल चलाए और लंबी लंबी रेगारियां बनाई। जब मसीह के जिस्म पर उन कोड़ों को मारा गया, और जहां पे वो कोड़े लगते थे और कोड़ा जब खींच देते थे, उससे लंबी लंबी रेगारियां बन जाती थी।
صرف یہی نہیں بلکہ خدا کے کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ انہوں نے میرے ہاتھ اور پاؤں کو چھید ڈالا. نہ صرف ہاتھ اور پاؤں کو چھید ڈالا، زبور 22 میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ میں اپنی ہڈیوں کو گن سکتا ہوں کیونکہ میری سب ہڈیاں اکھڑ گئیں. اور یہ کلام میں لکھا ہے کہ ہڈیاں اکھڑ گئیں، یہ نہیں لکھا کہ ہڈیاں توڑی گئیں. فسا، جب پہلی فسا ہم دیکھتے ہیں موسیٰ کو خدا نے حکم دیا کہ جب تو فسا کھانا تو کوئی ہڈی نہ توڑنا. اس لیے ہمارے یسوع مسیح کی جس نے اپنی نجات کی خاطر اس کے ہاتھ، پاؤں، پسلی، سر اور جسم چھیدا گیا، اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی کیونکہ اس کے سارے وعدے ہاں کے ساتھ ہیں. اور آپ نے بھی ان سارے وعدوں کو کیسے لینا ہے؟ ہاں کے ساتھ لینا ہے. He is a God of yes God. Amen. اس کے جب ہم اس کے وعدوں کو یاد کرتے ہیں we receive the benefit of this salvation. لیکن جب میرے عزیزوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، ہم اس کے وعدوں کو، اس کے کلام کو بھول جاتے ہیں تو یہ نجات ہمارے لیے بے فائدہ ہو جاتی ہے. لیکن جب اس کے وعدوں کو کہ اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی گئی. آمین. آئیے ہم اپنے کلام کی طرف بڑھتے ہیں. دوسرا کلمہ جو نجات کا کلمہ ہے، اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا 15 باب اس کی 27 آیات میں دیکھیں، خدا ان کے پاک کلام میں لکھا ہے اور انہوں نے اس کے ساتھ 2 ڈاکوؤں کو، ایک کو دائنی طرف اور ایک کو بائیں طرف کیا کر دیا؟ آپ بولیں میرے ساتھ، آپ بولیں. جب آپ بولیں گے something will happen. When you mute, nothing will happen. 2 ڈاکو کو، ایک کو دائنی طرف اور دوسرے کو بائیں طرف کیا کر دیا؟ مصلوب کر دیا، تاکہ یہ نوشتہ پورا ہو جائے کہ او بدکاروں میں گنا گیا. یسایہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی قبر بھی شریروں کے درمیان ٹھہرائی گئی. یسایہ میں یہ لکھا ہے کہ وہ بدکاروں کے ساتھ شمار کیا گیا. لیکن سوچنا آج آپ نے اس بات پہ ہے کہ یہ کون سی ایسی مخلوق تھی جس کے لیے خدا نے اپنے اکلوتے بیٹے کو اس جہان میں، اس دردناک موت میں اور اس قربانی کے لیے مہیا کیا. وہ کون سی ایسی مخلوق